Good morning, all of you. So we are going to start today. Today we will discuss about motion in a combined electric and मैग्नेटिक फील्ड. सो इसको वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोल सकते हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन सेलेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी. ओके. सो अप टू दिस लास्ट वी हैव स्टडीड 3 केसेस. सो 3 केसेस कौन से अगर से एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो व्हाट इज द फोर्स व्हेन देयर इज ए पैरेलल और एंटी पैरेलल केस. फर्स्ट केस में क्या है, पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी थीटा इज इक्वल्स टू 0 और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो व्हेन सेकंड केस में है पार्टिकल विच इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सो थर्ड केस उसमें सेकंड केस में देखिए फोर्स आएगा तो फोर्स के लिए यूज़ करके वहाँ पे आर यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो एज दिस केस इज सर्कुलर मोशन, circular path which is following due to the magnetic field in a circular path. Okay. So and there also we know kinetic energy. So from this we will step by step we have derived some equation. Next third case में when particle enters in a magnetic field at an angle theta, so theta corresponds to 0 degree, not 0 degree or 90 degree. So this is little bit 0 to 60 or 80 70 like this. That will follows helical path. Okay. So from this what is the force and what is the time period, then we will study and in that one velocity select velocity components perpendicular and parallel. Okay. So this is what yesterday's class. So we are going to study the combined in motion in a combined electric and magnetic field. Motion in a combined means what? There is a combination of electric field and magnetic field. There is a combination of electric field and magnetic field. Both are in one. So what it experience? Okay. So that we'll call it as velocity selector. Okay. Velocity selector we will study here. So motion in a combined electric and magnetic field. So साइड में यहाँ पे देता हूँ clarification. So all of you listen. So when you know that charge q moving with the velocity in the presence of both electric and magnetic field. So देखिए तो charge q is present in a electric field and magnetic field. So both are applying here. So electric field and magnetic field both will experience some force. So electric field experiences a force along their line joining the other charge. So मान लो ये प्लस है ये माइनस है. So this will act some force along their line joining. So it will repel or attract. It will attract each other. So like this. Okay. So magnetic field is also present while there is charges are moving from some time or there is a flowing. When the charges are flowing, so there is also what magnetic field is present. There is a combined effect. Okay. So when charge particle q is moving with a velocity v in the presence of both electric field and magnetic field. Okay. It experiences force. So both are experiencing force. Okay. So this force we have to find out here. Listen. Okay. तो चार्ज को क्यू यहाँ पे रखो. ओके. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपको क्यू के लिए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई
Okay, in the direction of electric field, in the direction of electric field. ओके, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, चार्ज के ऊपर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स मीन्स तो एफ सफिक्स एम. ओके, सो क्यू इंटू वी क्रॉस ऑफ बी. ओके, ये होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वी क्रॉस बी, परपेंडिकुलर टू वी क्रॉस बी. सो you know electric force, that is electrical field, F is equals to Q into E. Okay, force is equals to charge into electric field, magnetic force is equals to Q into V cross B. So V cross B क्या है आपका, perpendicular. So V and B are perpendicular. Okay, so consider case in which electric field, magnetic field are perpendicular to each other, that is crossed. Okay, so also perpendicular to velocity of particle. Okay, so listen, I am going to draw perpendicular direction, electric field and magnetic field. So electric field a direction देता है, तो यह this is charge. Okay, so this is x axis, this is y axis, this is z axis. Okay, electric field and magnetic field are perpendicular to each other, so this is magnetic field. Okay, this is the velocity direction along x axis, y axis, z axis. So I am going, I have given in notes. Okay, just clarify your concept. We shall consider the case, simple case in which electric and magnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to velocity and magnetic field of the particle. So यहाँ पे डायग्राम में शोन करे सो है. Okay, so we know that the case in which electric and magnetic field are perpendicular to each other, that is crossed. Okay, so also perpendicular to velocity and magnetic field. ये आपका magnetic field direction, ये velocity direction. Okay, V is along x axis, E is along y axis. Okay, next है so we will have force on y axis, that is electric field, so and force on magnetic field. So this is opposite to each other, this is opposite to each other. The electric and magnetic force are opposite in opposite direction, so as shown in figure here. Okay, so suppose we adjust the value of E and magnitude of B. तो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड बोले तो E एंड V, सो ऐसा एडजस्ट करना चाहिए बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन अपोजिट, ये इसके लिए अपोजिट है. सो देर इज ए टोटल फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो. फोर्स, टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. सो देन टोटल फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो एंड चार्ज विल मूव इन द फील्ड्स अनडिफ्लेक्टेड. सो दिस हैपन्स when both are equal and opposite direction. So this is condition. Okay, see here, the magnetic force or electric force on a particle is how much, is Fe is equals to QE. Okay, so QE, so QE is along y axis, no, so there is a component along J. Okay, unit component J. Next, which is along y axis. The magnetic force of charged particle Fm or magnetic field Fm or magnetic force F suffix F M, Q into V cross B, V cross B. Therefore Q as it is, V के लिए डायरेक्शन कौन सा है, V I, this is I, this is J, this is K, like this. So Vi component cross B into K. Okay, this is cross product. So पूरे के पूरे कैसे है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, that means there is a cross product. Okay, by using cross product, so we can know the F total force and Fe and Fb are opposite
in direction, opposite in direction. Therefore total force F is equals to F E plus F B. ओके, सो ऐड करना है आपको अलॉन्ग ये कौन सा डायरेक्शन पे, नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस. ओके, सो लिसन हियर, दिस इज इक्वल्स टू एफ ई कितना है, क्यू ई जे माइनस, सो एफ बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एफ बी. ओके, इसको एफ बी भी बोल सकते हैं. इट मीन्स क्यू वी बी जे, क्यू वी जे. सो दिस इज व्हाट, क्यू कॉमन ले लो, ई माइनस वी बी इंटू जे. ओके, सो दिस इज व्हाट, क्यू E minus VB into J. So as shown in here. So this is what total force is equals to Q multiply into E minus V cross B. V cross B. V cross B. So this is the case like this here. So F is equals to Q into E minus V cross B as shown in figure. If the value of E ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वैल्यू ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए एडजस्ट करना है कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. सो नेट फोर्स क्या रहेगा, आपको जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो. लेकिन जब ऐड करना है तो नेट फोर्स पार्टिकल बिकम जीरो एंड चार्ज पार्टिकल मूव्स इन स्टेट विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन. ओके, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा. तो F इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है, Q इंटू ई माइनस वी बी इंटू जे. सो दिस इज जीरो नेट फोर्स. F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई माइनस वी इंटू टू इंटू जे. सो इस जीरो क्यू ई इधर लेके आओ, अदरवाइज माइनस वी बी जे यहाँ पे लेके आओ. ओके, सो क्यू E is equals to QVB, QVB. So Q get cancel. Therefore E is equals to VB. Okay. Next V is equals to E by B. E by B. So this is what equation. V is equals to electric field divided by magnetic field. This is the velocity equation with which the particle moves condition. Okay, this condition can be used to select charge particle of particular velocity. Okay, this is important case, velocity out of what, beam containing charges moving with different speeds irrespective of charge and mass, irrespective of charge and mass. इसके लिए कुछ important चीज़ याद रखना है यहाँ पे. Okay, the crossed E and B fields, these are what, electric field and magnetic field. The speed V and B passes undeflected through the region of crossed fields. This method was employed by J.J. Thomson in 1897. So in 1897 में J.J. Thomson ने किसके लिए यूज़ करा, टू मेजर द चार्ज टू द मास रेशियो, उसको बोलते हैं हम E by M रेशियो. सो E by M रेशियो. ओके, सो यहाँ पे साइड में लिखे जो है, बी केयरफुली देखते जाओ. सो दिस इज वन प्रिंसिपल. सो हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे इस प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं इन द व्हाट, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है. तो वहाँ पे क्या करेंगे, दैट डिवाइस which separates the charge particles, usually ions रहेंगे according to their charge to mass ratio, according to their charge and mass ratio. Okay, so once again I will repeat. देखिए यहाँ पे, so this is what your velocity selector equation. so यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो velocity also perpendicular to magnetic field. So go through the video, this is notes. Okay, there is a what clarification. Okay,
So if any doubt means ask me. We have one significance here. So this significance what it indicates already I have told you. Therefore velocity कितना है आपको v by b. So this is what velocity selector used to accelerate or to select charge particle in a particular velocity, in a specific velocity out of beam containing charges moving with different speeds. So इसके लिए क्या यूज करेंगे आप q और प्लस q और माइनस q. दिस चार्ज विल हैज सम स्पेसिफिक डायरेक्शन. So this is for use for containing particular velocity as a charges moving with different speeds. Okay, we will select one type of velocity, that is significance here. So this significance is used for various purpose, used for higher studies. So we have next is cyclotron. cyclotron के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू.